Hi everyone, I'm Girish and welcome back to another video. So इस वीडियो में I have come up with something that I believe will truly help most of you who have interviews lined up in a couple of days. तो अगर आप confused हो कि interviews है in some days and what all things I should focus on, then I believe this is the perfect video for you. So in this video I'll be sharing about what are the do's and don'ts before the interview, how you should manage your time and what all things you should focus on in the days that are left just before the interview and many more such things. So इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा to know everything about it. So the first thing you should prepare for is a good introduction about yourself, because this is literally the first thing that the interviewer will ask you once the interview starts. तो अगर आपने खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया विद अ गुड कॉन्फिडेंस एंड काम एंड कंपोज माइंड सेट, देन द इंटरव्यूअर विल ऑल्सो हैव अ गुड इंप्रेशन अबाउट यू एंड पूरे इंटरव्यू का एक पॉजिटिव माइंडसेट सा बन जाएगा विच विल ऑल्सो हेल्प यू इवेंचुअली. तो जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो खुद को, यू कैन ऑल्सो मैंशन अबाउट योर इंटरेस्ट इफ द जॉब प्रोफाइल कंप्लीटली अलाइंस विथ योर डोमेन ऑफ इंटरेस्ट. तो दिस विल ऑल्सो हेल्प द इंटरव्यूअर टू नो कि आप ट्रूली इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो. यू कैन ऑल्सो मैंशन अबाउट योर मास्टर थीसिस और मेजर प्रोजेक्ट इफ इट ऑल्सो लाइज इन द सेम डोमेन एज ऑफ द जॉब प्रोफाइल. सो इससे क्या होगा ना कि लेट्स से द इंटरव्यूअर गेट्स इंटरेस्टेड अबाउट दैट प्रोजेक्ट, देन ही विल स्टार्ट आस्किंग मोर क्वेश्चंस अबाउट इट. सो नाउ फ्रॉम हियर द बॉल इज इन योर ग्राउंड, बिकॉज आपने वो प्रोजेक्ट किया है तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में एंड टू एंड पता होगा. सो फ्रॉम हियर यू कैन एक्चुअली ड्राइव द एंटायर इंटरव्यू. So do mention about it if it lies in the same domain. So the next big thing that you should focus on is the various projects that you have mentioned on the resume. तो लेट्स से आपने 3 या 4 प्रोजेक्ट जितने भी आपने रेज्यूमे पे डाले हैं, इंश्योर दैट यू नो अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स इन डिटेल एंड एंड टू एंड. जैसे कि what is the problem that the project is trying to solve, or let's say what all features you have implemented in this project, or what is the technology stack you used while developing this project, or let's say what all challenges you faced while developing it and how did you overcome those challenges, or let's say if this was a group project, then what was your specific contribution in this project, etc, etc. So ensure that you have a very crisp and nice summary about the project. Ensure that it is not exceeding 2 to 3 minutes. एंड ये आपको हर प्रोजेक्ट के लिए करना है. सो जब भी इंटरव्यूअर आपका रेज्यूमे स्क्रीन करेगा, ही माइट आस्क यू टू एक्सप्लेन 1 or 2 of those projects in detail, and then you will have a good discussion around it. You can also utilize this time for proper revision of the concepts and theories that you have learned so far. एक बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कि वो इस टाइम में भी इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स दे आर स्टिल लर्निंग न्यू थिंग्स. But I will say कि do not learn new things, but instead focus on revision of already done things, which will help you to recall the stuff at the interview time. So do ensure that you are revising during this time frame. So आप इस टाइम को जो भी common subject जो most of the interview rounds में पूछे जाते हैं, जैसे कि object oriented programming, operating systems, computer networks, or the interviewer sometimes also ask you to write the SQL queries or even the pseudocode for different program flavors. जैसे कि मुझे पूछा गया था to write a multi-threaded program for some synchronization mechanism. तो बेसिकली ये सब इंटरव्यूअर्स का कॉमन क्वेश्चंस होता है जो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू राउंड्स में रिपीट होते हैं अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज एज वेल एंड फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स. तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. ऑल्सो आप इस टाइम में गूगल या फिर यूट्यूब पे जाके प्रीवियस ईयर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ सकते हो फॉर वॉट एवर रोल एंड कंपनी यू विल बी इंटरव्यूइंग फॉर. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. इफ नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, देन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड अक्रॉस द ईयर्स. सो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो गो थ्रू वेरियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आउट देयर ऑन द यूट्यूब. सो आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो अबाउट माई कॉलकॉम एंड मैथवर्क्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. Next, you can also go through some of the managerial plus HR interview questions that are famous and that are asked by most of the companies. So if you go to the internet and type top 50 HR interview questions, then आपको एक list मिल जाएगी. So just scroll over that list and सोचो कि आपको अगर वो क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में तो what will be your answer. So I am not saying कि exact statements frame करो, but just have some bullet points about it. Which will actually help you. अगर आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया है तो यू विल हैव सम फेयर आइडिया अबाउट क्या आंसर देना चाहिए. And this will actually help you to crack the HR interview easily, because I have seen some folks who actually get rejected in HR interview as well.
So do prepare for such kind of question. So at the last, here are some of the common tips from my side based on my experience. So first one is that do not panic. So let's say अगर आपको इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर इट और लेट्स से यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट और रिकॉल द सोल्यूशन फॉर इट, then just frankly tell the interviewer कि you are not able to do it. So interviewers are kind enough and they might give you some hints or they might even move to the next question. सो जब भी आप लेट्स से अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते तो डू नॉट स्ट्रेस और पैनिक अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन. जो भी नया क्वेश्चन आपको पूछा गया है जस्ट फोकस ऑन इट कम्प्लीटली एंड फॉरगेट अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन. अदरवाइज आपका इंटरव्यू पूरा मेसअप हो सकता है. So the tip number 2 is do not directly say no to any question. So let's say अगर इंटरव्यूअर ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा है जो आपने पहली बार देखा है, so instead of directly saying no, आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि not sure but I can try this. This helps interviewer to understand that आप एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करने को ट्राई कर रहे हो when you are not knowing the solution to that question. तो इससे पता चलता है कि यू आर गिविंग एफर्ट्स टू ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड इससे आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी जज होते हैं. सो गिव इट अ ट्राई एंड जो भी आप सोचोगे फॉर दैट क्वेश्चन थिंक आउट लाउड सो दैट इंटरव्यूअर इज ऑल्सो इन सिंक एंड लेट्स से ट्राई करते वक्त आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हो देन इंटरव्यूअर माइट ऑल्सो ट्राई टू करेक्ट यू एंड गिव हिंट सो दैट यू कैन रीच द सोल्यूशन. So it's always better to give it a shot before directly saying no. So the tip number 3 is do not at all try to lie during the interview because let's say आपको कोई question पूछा इंटरव्यू ने and even after giving a lot of time and effort you are not able to come up with the solution. तो इंटरव्यू को फ्रैंकली बता देना इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लफिंग ऑन इट बिकॉज इफ द इंटरव्यूअर कैचेस दैट यू आर ब्लफिंग तो बेस्ड ऑन दैट रॉन्ग आंसर ऑफ योर्स ही माइट ट्राई टू ग्रिल यू एंड आपका इंटरव्यू पूरा आगे का खराब हो जाएगा. सो अगर आपको नहीं जम रहा है उसके बाद भी जस्ट फ्रैंकली टेल द इंटरव्यूअर कि यू आर नॉट एबल टू कम विद द सोल्यूशन. सो ही माइट इवन गिव यू सम हिंट जो आपको एक्चुअली हेल्प करेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन और ही माइट कैरी फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल. सो एंश्योर दैट यू आर नॉट ब्लफिंग एट ऑल ड्यूरिंग द इंटरव्यू. So here's the last tip. Do ensure that you are keeping the printouts of your resume ready beforehand to avoid any last minute rush. So बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे रेज्यूमे की प्रिंट आउट के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं. कीप दोज प्रिंट आउट्स रेडी बिफोर हैंड एंड जितने भी डिफरेंट कंपनीज के लिए आपने अलग अलग सीवीज बनाए थे सो एंश्योर दैट यू हैव प्रिंट आउट फॉर ईच ऑफ दोज सीवीज and ensure that you are also carrying those printouts with you when you are going for the interview. So that's all from my side. I wish you all the best for your interviews lined up and I hope that you are able to crack those interviews and get the desired job offer. Until then, take care and see you in some another video.